यस बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज कंसेप्ट। हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग शेयर कैपिटल का सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। आज क्या करना है सर? आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 1 मार्क 2 मार्क्स 3 मार्क्स का सेगमेंट में है वो सबको डिस्कस करना है। 8 मार्क क्वेश्चंस ना यहाँ इस चैप्टर से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसका एक दो प्रॉब्लम मुझे करना है, वो आपके साथ में डिस्कस कर लूंगा। सो अभी क्या करेंगे आज के क्लास में 1 मार्क 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सही है बच्चों? चलो लेट्स स्टार्ट। यस, डिवेंचर होल्डर of a company gets interest. Shareholder gets dividend. Authorized capital is maximum amount of share capital up to which a company can issue. Point number B. The document required for issue of share capital is prospectus. मैंने जब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था प्रोस्पेक्टस के बारे में बोला हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स शेयर कैपिटल इज ऑथोराइज्ड कैपिटल or called up capital or paid up capital or issued capital. It is going to be paid up capital. Yes. The balance of share forfeiture account after reissue is transferred to capital reserve. Yes sir. 2021 में कुछ भी क्वेश्चंस आया नहीं था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट्स, सी रिपीट हो गया, dividend. Debenture holder gets interest. Document required for issue of share capital to the public by a public limited company is prospectus. Perfect. Debenture holder gets interest. 2018 का देखो, shareholder gets, भाई यही क्वेश्चन रिपीटेडली पूछ रहे हैं। Dividend. After reissue of forfeited shares, balance of share forfeited account is transferred to capital reserve. The balance of share forfeiture account is transferred to capital reserve. The document required for issue of share capital to the public is prospectus. Shareholders of a company gets dividend. Authorized capital is the maximum amount of share capital up to which a company can issue. Maximum amount up to which a company can issue capital is called authorized capital. उसको बार बार repeatedly पूछ रहे हैं। The document required for issue of share capital by a public company, prospectus. A debenture holder gets interest. Calls in arrear each an asset. Credit balance of profit and loss account forms part of general reserve. If vendors are issued fully paid shares of rupees 2 lakh in consideration of net asset of 1,60,000, the balance 40,000 will be debited to goodwill account. आप किसी का एसेट लेके आए 1,60,000 का, आप उसको 2 लाख का शेयर दिए, 40,000 क्यों ज्यादा दिए? क्योंकि आप उसके गुडविल के लिए दिए, तो वो क्या होगा? गुडविल। ए शेयर होल्डर गेट्स, सर आपने अभी ही याद कर लिया, डिविडेंड। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इशू ऑफ शेयर कैपिटल इज प्रोस्पेक्टस. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स टुवर्ड्स शेयर कैपिटल इज पेड अप कैपिटल. ए शेयर होल्डर गेट्स dividend. Maximum amount up to which a company can issue capital is called authorized capital. After reissue, balance of share forfeited account is transferred to capital reserve. A public limited company can raise share capital by issue of prospectus. What do you mean by preference shares? A share which gets a preference over equity share is known as preference share. These shares will get a fixed amount of dividend, and at the time of winding up, these shareholders will be paid prior to the equity shareholders. This is known as preference shares. Perfect sir. पॉज करना, लिख लेना इसका मीनिंग। 1 मार्क आने से भी यही लिखना, 2 मार्क आने से भी यही लिखना, 3 मार्क आने से भी यही लिख लेना। Calls in arrear क्या होगा? Is an asset.
कॉल्स इन एरियर इज एन एसेट. व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? ये वाला रहा आंसर. व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल बच्चों? यहां पे तो लिखे थे हम लोग, द मैक्सिमम अमाउंट up to which company can issue capital is called authorized capital. Is called authorized capital. Perfect. The maximum amount up to which a company can issue share capital is called authorized capital. इसमें यहीं पे भी नीचे भी है इसका आंसर, authorized capital. Authorized capital. एक सेकेंड बच्चों, सॉरी. Authorized capital. Authorized capital. Yes, sir. What do you mean by redeemable preference share? A preference share which can be repaid after a certain period of time. That is known as redeemable preference shares. Perfect. Calls in advance is a liability. लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी किया है ये. परफेक्ट सर. व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? ये सर रिपीट क्वेश्चन हो गया. कॉल्स इन एरियर इज ए एसेट, ये फॉल्स में आएगा. व्हाट डू यू मीन बाय रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? अभी रिपीट किया मैंने. What do you mean by issue of shares at a discount? Whenever shares are issued at a price less than its face value, known as shares issued at discount. चलो, calls in advance is a liability. Repeat question. What type of profit is premium on issue of shares? Capital profit. Capital profit. Capital profit. एक सेकेंड बच्चों. Yes. How are debenture classified from the point of view of security? Secured debentures and unsecured debentures. Secured debentures and unsecured debentures. Name any one clause of memorandum of association. Name clause. What do you mean by calls in advance? Whenever call money is received prior to its due, it is known as calls in advance. Or else you can also go through your book to find out the accurate answer. This is also a correct answer. You can write in the exam, no problem. What is issue of shares at premium? Whenever shares are issued at a price more than its face value, it is known as shares are issued at a premium. Premium on issue of share of a company is a dash to the company, is a capital income to a company. Capital income to the company. What do you mean by issue of shares at par? Whenever shares are issued at a value equal to its face value, it is known as shares are issued at par. In India, company can issue dash type of shares, two types of shares, equity shares and preference shares. 2 marks question. What is mean by issued capital? It is the number of shares issued to the public. It is the number of shares issued to the public. Perfect. What do you mean by par value of shares? अभी repeat किए थे हम लोग. A share issued at a price which is equivalent to its face value is known as shares issued at par. Repeat question है. What is a bearer debenture? Bearer debenture is a type of debenture whose record are not maintained by the company, and the debenture holder will get interest by producing the related document to the company. Perfect, sir. Write any two special features of equity share. Equity shareholders are the real owner of the company, and they get the residual profit in the name of dividend. What is oversubscription? When the number of shares received, when the number of applications received is more than the number of shares issued, it is known as oversubscription of share. What is called up capital? It is the amount called by the company to the shareholders. What are the preference shares enjoyed by the preference shareholder? What are the preferences shares enjoyed by the preference shareholder? Preference shareholders get a
dividend, get a fixed amount of dividend, uh, and second preference is they get paid prior to the equity shareholders at the time of winding off. What do you mean by redeemable preference share? Preference share which can be repaid after a certain period of time is known as redeemable preference shares. What do you mean by calls in advance? Repeat हो चुका था ये, repeat question है ये. What is subscribed capital? It is the number of shares taken by the shareholders, or we can say that from company point of view, it is the number of shares allotted to the shareholders known as subscribed share capital. You can say like this is the correct answer, right? You have to write this answer, what I am saying now. Number of shares allotted to the shareholders is known as subscribed share capital. What do you mean by issue of shares at par? What do you mean by issue of shares at par? Same sir, repeat question है ये. डिफाइन विल ऑफ एक्शन, ये कहां से क्वेश्चन आ गया, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए. व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर्स? रिपीट कर चुके. व्हाट इज मीन बाय डिवेंचर? डिवेंचर्स आर द डेब्ट डॉक्यूमेंट्स. डिवेंचर्स आर द डेब्ट डॉक्यूमेंट्स which are issued to the public by the company to raise long term finance. ये क्लास आपको पॉज करके मैं जो बोल रहा हूं लिखने के लिए वो लिख लो. पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो. What do you mean by bearer debenture? Repeat question है ये. What do you mean by pro rata allotment? Sir, whenever application receipts are more than the number of shares issued, if company wants, they can allot shares to all the applicants in a proportionate basis. That is known as pro rata allotment. What is premium on issue of shares? मैंने बोल दिया. एंड हाउ इट इज ब्रॉट इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट, इसके लिए इसका मतलब है जर्नल एंट्री. इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. What do you mean by forfeiture of shares? Forfeiture of share means cancellation of shares. When a shareholder unable to pay the call money, even if with repeated reminder by the company as a last resort can cancel its shares. It is known as forfeiture of shares. जो बोल रहा हूं पॉज करो लिखो. What do you mean by par value of share? Repeat question है. What is secured debenture? Debenture issued against a security is known as secured debenture. What is the advantages of preference shares? Sir, the shareholder of preference shareholder will get a fixed amount of dividend, and they will be paid prior to the equity shareholder at the time of winding off. What is meant by issued capital? Number of shares issued to the public is known as issued capital. What are calls in arrear? Whenever the shareholder unable to pay the call money, it is known as calls in arrear. Name any two clauses of memorandum of association. Two clause: object clause, name clause. What is bearer document? Repeat question. Bearer debenture. Repeat question. Any two special feature of an equity shares? Equity shareholder are the real owners, and they will get the residual profit in the name of dividend. What do you mean by subscribed capital? Repeat question बच्चों. Bearer debenture. Repeat question. Authorized capital. Repeat question. Calls in arrear. Repeat question. Pro rata allotment. Repeat question. 2015 में जो भी सब क्वेश्चन आया था वो सब हम लोगों को वो लोग ऊपर कहीं ना कहीं टेस्ट कर चुके हैं. इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को? ये क्वेश्चन बैंक अगर हम कवर कर ले तो मेरे ख्याल से तो 95% क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा. मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ 95% क्वेश्चन, बट मैं जितना देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मोर देन 99% क्वेश्चन यही से आएगा. व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? रिपीट क्वेश्चन सर. व्हाट आर द प्रेफरेंसेस एंजॉयड बाय द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? ये भी रिपीट क्वेश्चन. What is meaning redeemable debentures? Repeat question. Pro rata allotments? Repeat question. Registered debentures which are registered in the name of company is known as registered debenture. Authorized capital, secured debentures. Repeat. What is bearer debentures? Repeat. Issued capital. Repeat. Calls in advance. Repeat. Whenever, repeat, calls in advance बोला था ना. Whenever calls is paid by the shareholder before it's due, it is known as calls in advance. Yes sir, it is repeat question. 3 मार्क का क्वेश्चन देख लो आप लोग. Distinguish between shares and debentures. इसका डिस्टिंक्शन आप बुक से रेफर करना. 3 पॉइंट, 5 पॉइंट याद करो, सो दैट एग्जाम में 4 पॉइंट याद रहेगा तो 4 पॉइंट लिख लेना, 3 नंबर उसी से मिल जाएगा. अगर आप 3 ही पॉइंट याद करके जाओगे, अगर भूल जाओगे तो 2 पॉइंट लिखोगे, 2 मार्क मिलेगा. तो इससे अच्छा है कि आप 3 4 5 पॉइंट याद कर लो. चलो
एनी थ्री डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, वही बुक से रेफर कर लेना. व्हाट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड फॉर री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स? बोलो. री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर के लिए आपको क्या जर्नल एंट्री पास करना है? बैंक अकाउंट डेबिट, लास्ट क्लास में मैंने बताया था. शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल. Perfect. What is under subscription? When number of application received is less than the number of shares issued, it is known as under subscription. Perfect. 21 में तो एग्जाम हुआ नहीं था. 22 डिस्टिंक्शन इक्विटी से प्रेफरेंस शेयर्स, रिपीट क्वेश्चन. प्रोराइट अलॉटमेंट, रिपीट क्वेश्चन. अंडर सब्सक्रिप्शन, रिपीट क्वेश्चन. डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, रिपीट क्वेश्चन. कॉल सिनेरियो, रिपीट क्वेश्चन. शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रिपीट क्वेश्चन. Mention any three difference between equity share preference share, repeat question. Forfeiture of shares and reissue of forfeiture, imaginary figure के साथ एंट्री पास करो बोल रहा है. आपको पता है forfeiture of share का एंट्री क्या है, reissue of share का एंट्री क्या है, forfeiture का एंट्री क्या है. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं forfeiture का एंट्री. सर forfeiture में अब हमें 4 एंट्री बताए थे, कौन सा एंट्री लिखना है? अब हमेशा फर्स्ट एंट्री लिख लेना. अगर ऐसे बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट कुछ नहीं बोला है, तो पार का एंट्री पास करो. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल सिनेरियो, टू शेयर फॉरफीचर. री इशू का बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल. इमेजिनरी फिगर का मतलब ये है. Perfect. So any three distribution shares and debentures, repeat question. Difference in equity share preference share, repeat question. What is the importance of object clause of the memorandum of association? Object clause specifies the object for which company is formed. If a company does any activity beyond its object clause, that activity will be termed as invalid. This is the importance of object clause. State any three difference between share and debentures, repeat question. What purpose is served by the object clause of memorandum of association, repeat question. Distinction between debenture and shares, repeat question. Forfeiture of shares, repeat question. Forfeiture of shares, repeat question. Convertible debentures. When debentures are converted into shares with the fulfillment of certain condition, it is known as convertible debentures. Significance of capital clause of the memorandum of association. Capital clause of the memorandum, capital clause specifies the number of shares a company can issue to the public. Beyond that number, if company issues the share, then that share cannot be termed as a valid share. Distinction equity share and preference shares. Repeat question. So sir, with this we are done with all the 2 marks, 1 marks and 3 marks questions. अगर आप देखोगे तो 5, 6, 7 क्वेश्चन को छोड़ दे, वो ठीक से प्रिपेयर करोगे तो वही क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में रिपीट होकर आता है. तो आप उसको ज्यादा फोकस करके पढ़ लो. सर क्या इतना ही पढ़ना है? नहीं, आप रेगुलर क्लास में तो कुछ भी तो पढ़ाई किए होंगे. इसको थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना. मुझे लगता है कि इवन इफ शेयर कैपिटल का 5 क्वेश्चन आया तो 4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा रिपीट वाला. एक क्वेश्चन अगर वो नया पूछेंगे तो नया आएगा, और नहीं तो 5 का 5 पूरा ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वहां से भी आ सकता है. बट दोज हु आर लुकिंग फॉर गुड परसेंटेज like more than 90%, 85%, they should focus these questions more, and then apart from these questions you have to go through other questions also. आपको other questions भी देखना है, ठीक है ना. बट जिसका पढ़ाई ठीक ठाक नहीं हुआ है, अभी पढ़ने का कोशिश कर रहा है, बस भाई यहीं पे फोकस करो और आगे चलो, ठीक है. तो सर आज का क्लास हम क्या यहाँ पे खत्म कर सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं. चलो आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं. और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ग्रुप सी का, देखो यहाँ पे सब कुछ आपका प्रॉब्लमेटिक है. 10 क्वेश्चन से हम ट्राई करेंगे 3-4 क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी रिपीट क्वेश्चन होता है.
तो जितना भी सैम्पल क्वेश्चन होगा 2-3 वो सबको हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसका क्लास भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। सो फाइन सर बच्चों, लेट्स वाइंड अप टुडेज क्लास। अगेन वी विल मीट इन द